Question number 3, exercise 17.3, question number 3. Draw a triangle ABC such that AB is 5 centimeter, BC 4 centimeter, CA 4.5. Then construct a rectangle equal in area to the given triangle. Okay, we have a triangle with 3 sides. So let me start and draw the triangle with 3 sides. So first we take AB is 5 centimeter. So look, this AB is 5 centimeter. This is AB 5 centimeter. Okay. Then BC is 4 centimeter. So take a radius 4 centimeter. This 4 centimeter. With center B, draw an arc of 4 centimeter. And the second side is CA, that is 4.5 centimeter. So 4.5 centimeter means take a radius, this 4.5 centimeter. Look, this is 4.5 centimeter. So with center A, draw an arc of 4.5 centimeter which cuts the first circle at point C. This is C point. So join C to B and C to A. So BC is 4 centimeter and AC is 4.5 centimeter. Now the second is construct a rectangle equal in area. So we are going to construct a rectangle and we know that each angle in a rectangle is 90 degree. So for this, draw the bisector. Bisect AB. Bisect AB. So take a compass more than half of AB and draw the arc outside of AB up and below. And with point B, cut this arc. So this is the bisector which gives 90 degree. Okay, which cut AB at point D. Okay, up as in a rectangle opposite sides are parallel as well. So draw through point C, draw parallel lines which is parallel to AB. So C point से parallel lines draw करेंगे. Name it XY. Okay. This parallel line and this bisector intersect each other at point H. H पॉइंट पे कट कर रहा है. ये कोई भी लेबलिंग आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से. A B C D किया तो ये आप E ले सकते हैं. ठीक है, F भी ले सकते हैं. So this is H. अब चूंकि opposite sides are congruent as well, so look, ये हमें मिल गया 90 डिग्री का एंगल. ठीक है, और जब हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है. तो दिस ए डी इज वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल. तो अब ये देखिए, ये साइड और इसकी ऑपोजिट साइड फिर इक्वल होनी चाहिए. तो इसलिए हम क्या करते हैं,
इस डी ए रेडियस लेते हैं, डी ए रेडियस, ठीक है। ये डी ए आपने रेडियस लिया और इस एच पॉइंट पे रख के सामने कट कर दिया, इस पैरेलल लाइंस एक्स वाई को कट कर दिया, ठीक है। इसको लेबल कर देंगे हम आई। इस आई को ज्वाइन कर दें इस ए के साथ, सो ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आ गया। ए डी एच आई इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल which is equal in area to the given triangle। आते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। ओके, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो आपने लिखना है गिवन। ओके, सबसे पहले हमने लिखना है गिवन। अब गिवन में ट्राइंगल था, अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और रिक्वायर्ड की हेडिंग देंगे और रिक्वायर्ड में है टू कंस्ट्रक्ट a rectangle equal in area to the given triangle। ओके, नेक्स्ट में आ जाएंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप ट्राइंगल बनाया था, ठीक है। नंबर 1, ड्रॉ measurement of AB is equal to 5 centimeter। नंबर 2, विच सेंटर B and A आर्क्स लगाई थी, सो विच सेंटर A and B draw an arc of radius A से 4.5 सेंटीमीटर and B से 4 सेंटीमीटर respectively। Okay, number 3rd point, both the arcs intersect each other at point C। C पॉइंट पे कट किया, then join C to A and B, join C to A and B, so triangle ABC is constructed। ओके जी, अब नेक्स्ट हमने लिखना है रेक्टेंगल के स्टेप्स। सो ओके, रेक्टेंगल के स्टेप्स के लिए हमने सबसे पहले बाइसेक्ट किया था, सो बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी। बाइसेक्ट ए बी साइड एट पॉइंट डी।
और फिर उसके बाद हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थ्रू पॉइंट C. Draw this XY parallel to AB. XY को पैरेलल ड्रॉ किया हमने AB के साथ. नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा. अच्छा, पैरेलल ड्रॉ करने के बाद अब ये देखिए जो बाइसेक्टर था AB का, उसने इस पैरेलल लाइन को H पॉइंट पे कट किया. तो हम थ्रू पॉइंट C ड्रॉ पैरेलल टू AB विच कट्स, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. विच कट्स XY, और या बाइसेक्टर को नेम दे दें यहाँ पर PQ दे दें, PQ. ठीक है, विच कट्स PQ and that is the bisector at point H. ठीक है, इस PQ बाइसेक्टर ने इस पैरेलल लाइंस को इस H पॉइंट पे कट किया. ओके, फिर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया था. सो विथ सेंटर H, with center H, draw अच्छा एच आई हमने लिया था ए डी के इक्वल. ठीक है, सो विथ सेंटर H ड्रॉ एच आई कॉन्ग्रुएंट टू ए डी. ठीक है, जो कि कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है. सही है, जितनी मेजरमेंट इस ए डी की ली थी उतनी मेजरमेंट, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ए डी और एच आई जो कॉन्ग्रुएंट है. सही है, सो ज्वाइन I to A. So last step आ जाएगा, hence rectangle ADHI is a required rectangle which is equal in area to the given triangle. तो यहाँ आके हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग.